नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बीजेपी की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया और पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उससे जुड़े पर विषय को लेकर आज यहाँ प्रदेश कार्यालय पर इन सब विषयों को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी का आज दोबारा उद्घाटन हुआ है, उसका अवलोकन भी हुआ है। इससे पहले सभी जिला मुख्यालयों पर भी इस प्रकार की प्रदर्शनी स्थानीय स्तर पर भी हमारे सभी कार्यालयों पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के काल से ही हम लोगों ने कुछ संकल्प, कुछ कमिटमेंट तय किए थे। आज हमारे लिए देश के असंख्य भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के, शुभचिंतकों के लिए गर्व करने वाली बात है कि हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने उन संकल्पों को पूरा किया। चाहे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और केंद्र में भी धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि और अभी आपने देखा होगा बिल पर जिस प्रकार से सुधार के लिए विधेयक सरकार ने पारित कराया है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की तपस्या का और देश के 140 करोड़ लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को जिन्होंने आशीर्वाद और स्नेह देने का काम किया, आज ये बदलता हुआ भारत है और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हमारे आपके सबके सामने है। आज प्रदर्शनी के ये अवलोकन के साथ साथ हमारी पार्टी ने अगले चरण में, आज तक हम लोगों को सभी विधानसभाओं पर हमें सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन करने हैं और इसके बाद गांव, बस्ती और बाढ़ चलो अभियान के तहत हम लोग घर घर जाकर कल से 13 तारीख तक घर घर जाकर अपने संगठनात्मक विषय और अपनी सरकार का कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखें। अध्यक्ष जी, 1980 में स्थापना हुई भारतीय जनता पार्टी की। 45 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इस समय कांग्रेस पुराने दल को पीछे छोड़ दिया। ये एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह रही या ये एक हमारी विचारधारा को लेकर लोगों ने जिस प्रकार से जनता के बीच में संघर्ष किया, जनता के विषय मुद्दे उठाए और हमें जब जब जनता ने सेवा करने का अवसर दिया हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी के लोगों ने उन संकल्पों को पूरा किया जो कमिटमेंट हमने किए थे। आपने देखा होगा हमारी ऐसी पार्टी है, हमारी ऐसी सरकार है कि हम लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से घर घर जाकर अपनी सरकार का लेखा जोखा, कामकाज की चर्चा जनता के बीच में जाकर घर घर करते हैं। हमने जो कहा, हमारी पार्टी ने जो कहा, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उसे पूरा किया। उसी का ही परिणाम है कि आज 80 में जो पार्टी शुरुआत हुई, आज वो देश में, दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य हमारे हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्य हमारे हैं, सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, विधान पार्षद हमारे हैं, मेयर हमारे हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्ष हमारे हैं, प्रधान हमारे हैं, बीडीसी के मेंबर हमारे हैं, ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का, देश की जनता का मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति विश्वास और हमारी सरकार और हमारी विचार के आधार पर जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये स्वरूप हम सबके सामने है। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति पाकला कटपड़ी सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन 104 किलोमीटर के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि जिसकी कुल लागत 1332 करोड़ रुपए होने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2025-2026 की अवधि के लिए PMKSY की उपयोजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट यानी कि MCADWAM के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है, जिसका आरंभिक कुल परिव्यय
1600 करोड़ रुपए होगा। बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री पीसी कर इसकी जानकारी दी और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहला, आप अगर भारत के नक्शे में इमेजिन करो, हमारा जितना भी केरल साइड से, कर्नाटक साइड से रेलवे का ट्रैफिक नॉर्थ की तरफ जाता था, ईस्ट की तरफ जाता था, वो एक बहुत ही कंजेस्टेड सेक्शन के थ्रू पास होता था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किया, देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए प्लानिंग का एक बहुत अच्छा टूल एक अवेलेबल मिला, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिली। तो जब इस टेक्नोलॉजी पे, इस पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर सारे नेटवर्क को एनालाइज करते हैं हम, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बीच में से निकलते हैं जहां पर हमको तुरंत फोकस करके काम करने की जरूरत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है आज जो आपके सामने है। आप देखोगे, यहां पर आप फोकस करो तो चेन्नई, एमजीआर चेन्नई लिखा हुआ है, राइट, एमजीआर चेन्नई। अब उसके पास में उससे पहले एक आता है काटपाड़ी। काटपाड़ी है ना वेल्लोर, वेल्लोर और काटपाड़ी आसपास हो गए। जितना भी साउथ के केरल से, कर्नाटक से ट्रैफिक आता था, उस ट्रैफिक को पहले एक कंजेस्टेड सेक्शन से गुजरना पड़ता था। और अगर काटपाड़ी से रेणीगुंटा यानी तिरुपति, ये लाइन को अगर डबल कर दें, इस लाइन को अगर डबल कर दें, तो एकदम लिटरली जैसे बाईपास सर्जरी के बाद में बॉडी ठीक से काम, एक हार्ट सर्जरी, एक नई आर्टरी बन जाती है, वैसा ही ये प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसकी खासियत ये है कि छोटा प्रोजेक्ट होते हुए भी ये रेलवे के नेटवर्क में बड़ी एफिशिएंसी लाता है। थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज फैसला लिया गया। आप जानते हैं कि सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस हिस्टोरिक थर्ड टर्म में, जिसमें किसानों की जिंदगी में, किसानों के खेती करने के तरीके में एक मूल चूल, एक मेजर परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। उसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, जो कि सब स्कीम है, पीएम कृषि सिंचाई योजना का सब स्कीम है, वो अप्रूव की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आपने देखा होगा कि डैम से बड़ी कैनाल आती है, बड़ी कैनाल से छोटी कैनाल आती है। छोटी कैनाल आने के बाद में पानी जनरली कच्चे कैनाल, छोटे जो खेतों के अंदर जाने वाले होते हैं, उस तरह के कैनाल से, उस तरह के ड्रेन से पानी खेत के अंदर आता है। आप इमेजिन करो, एक ओपन कैनाल है, उसमें कितना पानी वेस्ट होगा। पानी जमीन में भी रिसेगा, इवेपोरेशन भी होगा, एक मेजर इनएफिशिएंटली यूज करने वाला एक मेथड उस तरह से बनता है। क्या इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एफिशिएंसी लाई जा सकती है? ये प्रधानमंत्री जी ने, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब माननीय मोदी जी ने बहुत कई तरह के इस तरह के प्रयोग सक्सेसफुली और बड़ी संख्या में गुजरात में किए थे। तो अब उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी जो गुजरात में किए हुए काम को एक नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए ये सब स्कीम बनी है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे आता हूं, जीरकपुर बाईपास। अगर आप चंडीगढ़ को ध्यान में दें, तो चंडीगढ़ के पास में बहुत ही प्लान्ड वे में पंचकुला, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में पंचकुला और जीरकपुर दो बड़े शहर बसाए गए, जो कि प्लान्ड सैटेलाइट टाउन्स हैं। जीरकपुर बेसिकली दो नेशनल हाईवेज के इंटरसेक्शन पर स्थित है। इन दोनों सेक्शंस के, इन दोनों हाईवेज के इंटरसेक्शन पे होने के कारण जीरकपुर के अंदर से ट्रैफिक का हमेशा एक चैलेंज रहता है, ट्रैफिक कंजेशन रहता है। तो पूरे चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला को लेके एक रिंग रोड जैसा कॉन्सेप्ट बना है। उसका ये पहला प्रोजेक्ट है, जो कि 6 लेन जीरकपुर बाईपास प्रोजेक्ट है। 1878 करोड़ रुपीस का है, करीब 19 किलोमीटर्स का है, 19.2 किलोमीटर्स। और इसको पीपीपी में हाइब्रिड एन्युइटी मोड पे बनाया जाएगा
इस प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट मिलेगा, हिमाचल का जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को इमीडिएटली ये प्रोजेक्ट माने शहर के अंदर जाने के बजाय बाईपास से ही आप हिमाचल की तरफ जा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कंप्लीट इस एरिया का डीकंजेशन होगा, चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला का डीकंजेशन इससे होगा और हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज है, इसमें से पास होना आसान होगा। उधर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की 75वीं वर्षगांठ समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। Leaders of India, representatives of educational institutions, ICCR scholars, friends from the media, dear guests. We are gathered here to mark the 75th anniversary of the Indian Council of Cultural Relations. And I'm sure I speak for all of you in saying how much today we enjoyed the performance of Stri Shakti of the cultural group from Vietnam and followed by the wonderful performance of foreign students of the ICCR. As is natural on such occasions, this is a time to remember the achievements and contributions of the ICCR, but it is also a time when our thoughts go to repurposing it better for the future. Now, 75 years is clearly a significant time for any institution to grow and develop, but it is an even longer time when it comes to the changes in the environment in which such an institution functions. Our nation and our society have changed profoundly in this duration. Today, we are, by any measure, more confident, authentic, and committed than before in terms of expressing our identity and promoting its understanding. Within the country, there is a much sharper awareness of our culture, heritage, and traditions. Indeed, there is pride about so many of their facets that they translate into a wide range of activities and initiatives. We see that when it promotes to promoting tourism and increasing our World Heritage sites. It is visible in campaigns like One District, One Product, or for that matter, in the support that we now give to the Vishwakarma community. Traditions and inheritance that were long neglected have now been revived. More languages enjoy classical status, and our habits and practices, whether we speak of yoga, Ayurveda, or millets, they are receiving a new impetus and momentum. In essence, India is today more Bharat, and the ICCR recognizes this transformation, and I'm confident will factor it into its future. Now, during this very period, the world has changed as well. Economic and political rebalancing have today set the stage for cultural rebalancing. The natural diversity of the world is asserting itself, and you saw a small sample here. Voices and practices long suppressed are beginning to be heard, not just heard again, but actually shaping the global discourse. As we move away from a particular version of globalization that served the interests of a few, these tendencies will accentuate further. In such a scenario, it is natural that a civilizational state like India would make its presence felt more strongly on the world stage. For ICCR, that means new horizons, new ambitions, and a new agenda. Now, friends, we live
not just in an era of flux, but we actually have entered an existence that is more regionalized and I would even say localized. Consider the implications of what in the diplomatic profession we often refer to as multipolarity. It means more choices, it means greater interplay and less hegemonism. This would also suggest a healthier interaction of different experiences and traditions of the world. For many, it opens up windows to rediscovery. To others, it creates opportunities for fresh collaboration. The nations of the global south are particular beneficiaries of these trends if they could create mechanisms for deeper cultural exchanges. The ICCR can make a difference by addressing itself to this task. When we look at the world, the diaspora plays an increasingly important role in shaping India's image. The compulsions of the global workplace are only going to increase the mobility of talent and skills. This will be over and above the historic migration that has taken place over the last few centuries. For India, the diaspora is both an invaluable connect and an enormous resource. Harnessing its energies more effectively should come high in the ICCR's priorities. The ICCR's mandate has evolved in these last 75 years to a considerable extent. We have both the intention and today the resources to project India's culture more effectively abroad. But culture itself has acquired broader connotations, extending to different facets of our social fabric. Encouraging a dialogue about our democratic traditions is one such example. Developing a deeper understanding of the inherent unity that has enabled diversity to flower in this country is another. We seek to also promote a better appreciation of Indian knowledge systems. Education, similarly, occupies a larger segment of the ICCR's mind space. When it comes to taking India out to the world, ICCR has to prepare for a far more complex and ambitious exercise than in the past. In fact, it is difficult today to talk about diplomacy without its cultural and soft power accompaniments. An example that comes to mind is our experience with the Quad. MEA, through the ICCR, has launched the Quad STEM Fellowships for Indo-Pacific nations. I know this will evoke a strong response. Indeed, India has been in the forefront of reaching out to the younger generation through its scholarships. I'm confident that ICCR will build further on these experiences. On its part, the world has already developed a considerable heritage of understanding about India. It has long been in ICCR's objective to promote Indology in all its dimensions. But this task has to be more contemporary, involving new generations with different requirements and utilizing modern tools. Indologists hold a unique value for the global propagation of our culture. That must be recognized, it must be respected, and it must be more actively promoted. The journey of development in the Amrit Kal is based on the twin tracks of tradition and technology. Far from being in contradiction, as many believed for years, they actually form a composite whole. Indeed, they are a fusion of our past and future, which continuously determines the present. In its set of jurisdictions, ICCR could actively explore the synthesis. A good example is working on manuscripts using latest technologies. Let me make a reference here to our G20 presidency because perhaps
there are few events in recent times which brought out the importance of bringing the world to India more effectively than that presidency. In that particular year, we saw the most effective influencers of the world of our times come, see, and leave impressed. 2 years later, we are still seeing the reverberations of that presidency, which I believe would continue further. Just as we wish the world to understand us better, it is important that Indians too develop a good feel for other societies and cultures. This is a domain in which the ICCR has long been active, whether it is in performing or fine arts, literature or cinema, or indeed in the exchange of artists and students. Refreshing and increasing these practices for the times ahead is therefore very important. The ICCR boasts of alumni across all geographies and cultures. Organizing them better, using databases and mobilizational tools is now more necessary than ever before. The alumni themselves have an interest in remaining connected, and of course we do to an even greater degree. It is also common practice for organizations to leverage the capabilities of others with similar goals and interests. These could be forces in civil society, other governments, or even like-minded groups and individuals. Getting better value for resources is always a driver of self-improvement. The ICCR should certainly keep that in mind. The last decade has demonstrated how soft power endeavors can be run on a scale, in fact on a global scale. We saw that when it came to popularizing yoga, or in propagating Ayurveda and wellness practices. In fact, in encouraging the consumption of millets as well, or in enhancing interest about India's history and traditions. These could serve to motivate ICCR as it enters the next phase of its growth. So, friends, ladies and gentlemen, let me, on my own behalf and on yours, wish Team ICCR all the best in the times ahead. I am confident that they will continue to grow and they will continue to contribute to our quest for a Viksit Bharat. Thank you very much. और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की 75वीं वर्षगांठ को लेकर जो है विदेश मंत्री ने यहाँ पर समारोह में शामिल हुए और साथ ही साथ उन्होंने अपना संबोधन भी यहाँ व्यक्त किया। और जिस तरीके से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ये 75वीं वर्षगांठ थी और जिसके दौरान समारोह में विदेश मंत्री इसमें शामिल होकर अपने संबोधन में व्यक्त किया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।